Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं अमजद अली मिनास और हमारा कोर्स है कास्ट अकाउंटिंग और जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, which is the third most important element of manufacturing cost. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलेशन ऑफ एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट पे बात की थी और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि देयर आर 6 इंपॉर्टेंट बेसिस जिनकी बुनियाद पर हम एफओएच अप्लाइड रेट या एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया करते हैं। आज के दिन जो क्वेश्चन मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं उसमें उस एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट को हम अप्लाई करेंगे। मैंने इस टॉपिक पे आगाज पे आपको बताया था कि एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन और एप्लीकेशन ये हमारा टॉपिक है। सो पिछले लेक्चर में हमने जस्ट कैलकुलेशन पे बात की थी। आज हम कैलकुलेशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ एफओएच कास्ट इस पे बात करेंगे। सो आइए देखते हैं कि आज के प्रॉब्लम के अंदर क्या डेटा अवेलेबल है। कास्ट डिपार्टमेंट ऑफ बाहू इंडस्ट्रीज मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 3,75,000, डायरेक्ट मटीरियल्स रुपीज 6 लाख, प्रोडक्शन 20,800 यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर रुपीज 1,50,000 and direct labor hours 62,500. Requirement is factory overhead rate based on direct labor cost, direct labor hours, direct materials cost. और second requirement है total cost of job number 924 using each rate in one above. Job number 924 requires direct materials cost rupees 65,000, direct labor cost rupees 14,800 for 5,200 hours. Dear students, आपके इल्म में हैं वो 6 बेसिस थे। डायरेक्ट मटीरियल्स कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट, प्राइम कास्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूनिट्स ऑफ आउटपुट या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी इसे कहते हैं। इन 6 बेसिस में से आज हमें 3 बेसिस दिए गए हैं क्वेश्चन में और उनकी बुनियाद पर हमें कहा गया है कि एफओएच अप्लाइड रेट कैलकुलेट कीजिए। इसको एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट भी कहेंगे हम। और फिर इसी एफओएच अप्लाइड रेट को इस्तेमाल करते हुए आप जॉब नंबर 924 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कैलकुलेट करें। ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। सो नाउ वी मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन में हम जान रहे हैं कि आज का हमारा काम है कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। सो द फर्स्ट बेस इज डायरेक्ट लेबर कास्ट। हम मालूम करते हैं एफओएच अप्लाइड रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। फॉर्मूला इज एफओएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू estimated FOH divided by estimated direct labor cost multiplied by 100. My dear students, estimated FOH के अंदर estimated fixed FOH भी शामिल हैं और estimated variable FOH भी शामिल हैं। आगे चल के हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे जिनमें ये दोनों एस्टिमेट्स जुदा जुदा सेपरेट दिए होंगे। I mean estimated fixed FOH or estimated variable FOH. So once again we see the formula FOH applied rate is equal to estimated FOH divided by estimated direct labor cost, which is a base, multiplied by 100. FOH applied rate is equal to rupees 3,75,000 divided by rupees 1,50,000 multiplied by 100. Both these information are given in the question. So we get FOH applied rate to 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। ये डायरेक्ट लेबर कास्ट की बुनियाद पर
FOH का अप्लाइड रेट कैलकुलेट हो गया. Now we calculate FOH applied rate on the basis of direct labor hours. FOH applied rate is equal to estimated FOH divided by estimated direct labor hours. अब फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया. द रीजन इज अब जो आंसर आएगा वो रुपीस पर लेबर आवर आएगा, जबकि अगर ऊपर और फॉर्मूले के ऊपर और फॉर्मूले के नीचे दोनों वैल्यूज रुपीस में दी गई हों तो फिर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट किया करते हैं. अब एफएच अप्लाइड रेट इज इक्वल टू रुपीस 3,75,000 divided by 62,500 labor hours. Answer is rupees 6 per labor hour. So direct labor hours की बुनियाद पर भी हमने FOH applied rate calculate कर लिया. Now the third base, that is direct materials cost, और वो जो material cost की value है that is rupees 6 lakh. Formula will remain same, procedure will remain same. So FOH applied rate is equal to estimated FOH divided by estimated base, which is estimated materials cost multiplied by 100. So FOH applied rate is equal to rupees 3,75,000 divided by rupees 6 lakh multiplied by 100. FOH applied rate comes to 62.5% of materials cost. My dear students, आपके क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट इख्तिताम को पहुंची. हमने तीनों रेट कैलकुलेट कर लिए. नो वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड रिक्वायरमेंट, और वो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि जॉब नंबर 924 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैलकुलेट कीजिए. जॉब नंबर 924 के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम हुए हैं 65,000 के, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. डायरेक्ट लेबर कंज्यूम हुई है 14,800, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. And you people know very well that the aggregate value of direct materials cost and direct labor cost is known as prime cost. So prime cost comes to 79,800 plus we will apply first rate calculated by ourselves. FOH at the rate of 250% of direct labor cost, or direct labor is 14,800 और डायरेक्ट लेबर का आपने 250% कैलकुलेट किया तो दैट कम्स टू 37,000. इसको ऐड किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जॉब नंबर 924 की बन रही है रुपीस 1,16,800. मैंने आपकी सहूलत की खातिर नीचे सपोर्टिंग वर्क भी दे दिया है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट आपकी आई है 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, वो कैसे कैलकुलेट की गई है कि 14,800 मल्टीप्लाइड बाय 250 बाय 100, तो इस तरीके से आपकी ये 37,000 FOH कास्ट आती है. Now we calculate the total manufacturing cost of job number 924 by using FOH applied rate on the basis of direct labor hours. Direct materials 65,000 given plus direct labor 14,800. Prime cost remains the same 79,800, but now FOH applied rate is rupees 6 per direct labor hour. And you know in the supporting work 52 hours are given regarding direct labor hours multiplied by rupees 6, which is FOH absorption rate. So फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कम्स टू 31,200. प्राइम कास्ट के अंदर जब इसको एड अप किया जा रहा है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम्स 1,11,000. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ऑफ जॉब नंबर 924 by using FOH applied rate on the basis of direct materials cost. Prime cost remains same 79,800 and FOH applied rate is 62.5% of direct materials cost. As you know that total materials consumed is 65,000 and 62.5% of 65,000 comes to 40,625. So FOH cost 40,625 is being added
in the prime cost 79,800 and total manufacturing cost comes to 1,20,425. My dear students, इसके साथ ही ये आज का क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा. Now I would like to recommend that you have to attempt all the illustrations given in the book, number 1. Number 2, you have to repeat these questions which have been given by me. Moreover, there are 2 more questions in the exercises with a bit change in the values, but the format, the style, the procedure is same. You have to attempt both those questions by your own. And finally, I would like to say that my next lecture is highly important. The most important article given in this chapter is analysis of FOH variance. But before attempting the questions of analysis of FOH variance, I would like to give you brief intro, brief discussion, what is FOH variance and how we do the analysis of that FOH variance. So I would like to recommend that before going to watch my videos on the numerical on FOH variance analysis, you must see the coming video which is coming soon. Wish you all the best. Hope to see you in my next lecture. Thank you so much.